story and I go like, stop here. So yeah, I stop there. I stop there. I stop there. You see that? Shit. You see that? Oh shit. You see Oh that? shit. Oh So- shit. So just the fact that those two things are lighting up like that, like eyes with like a mask on or something. Look at that. You know, it looks like somebody's creeping up in the back. Although it's a car tire. But the fact that it's so you see, the fact that it's so coincidental that it has to happen this way and has to happen with us when we are experiencing all of these things around the house, it's just a little weird, you know? Like there's a video proof I have of Hashir going up in the balcony and the door closing automatically and him running away. There's a video on it because there's a camera over there. So yeah, there's a video proof of the fact Dinky slept walk at night and footage delete. and that footage has been deleted from our cameras. کیوں؟ Isn't that کس کے weird? پاس ایکسس ہے اس کی؟ میرے پاس access ہے. خالی شاہد کے پاس. Just that specific time frame. ڈنکی صبح کے 3 بجے اٹھ کے سلیپ واک کرتا ہے اور ہاشر کو جا کے کہتا ہے کہ دروازہ کھولیں, باہر ایک فیملی ہے, مجھے ان سے بات کرنی ہے. رات کے 3 بجے؟ I swear to God. صحیح ہے. God promise. We go to review that footage. We go to review that footage, and that footage, just that specific time frame does not exist. delete. It's off, and nobody has access to it. Like the main modem is right here in the living room. Nobody else has اور وہ access delete to بھی it. نہیں کر سکتا کوئی. صحیح ہے. Point is کہ it's weird. ایک footage ہے پرسوں کی where champion comes in the room and champion goes like, بھائی جان کل رات 3 بجے رات کو جب میں سو رہا تھا میں نے فلانی چیز دیکھی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو میں کچھ نظر آیا. پھر چیمپئن از سلیپنگ. صحیح ہے. لٹرلی سن دس 3 in the morning, champion is sleeping. He goes like and then he looks and then he's stuck there for 2 seconds and then he looks down like this and then he's sitting like this for the next 5 پورا minutes. خواب نہیں خواب وہ پورا سویا خواب نہیں دیکھ تھا. لیا نا. It's just weird that all of these things are Coincidentally happening بہت together. اکٹھی That's ہو all رہی I'm saying. چیزیں. That's all I'm ہاں. saying. I understand everything could be ہاں. explained. Once again, بالکل, صحیح ہے, ہاں. میں although میں ان چیزوں میں believe کرتا ہوں لیکن ہر چیز کی explanation ہوتی ہے. Explanation ہوتی ہے. لیکن the fact کہ ساری چیزیں ایک اکٹھی ساتھ ہو رہی ہیں اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. ہاں یہ ہے. اور اب 3 مہینے ہو گئے ہیں, لائک بہت ساری چیزیں. اس دن کوئی اوپر تھا بالکنی میں, اس کے سر کے پیچھے آ کے پتھر لگا 2 دفعہ چیمپئن کی, اور ہم نے دیکھا ہے. You know what I mean? تو عجیب چیزیں, خیر بہت ساری چیزیں ہیں. آنٹی نے دیکھا واک کرتے ہوئے باہر, آنٹی واک کر رہی تھی تو اوپر بالکنی میں آنٹی کہتی کوئی لڑکی ہو گئی ہے ایک دم. ڈنکی کو لڑکی نظر آئی, ڈنکی کو بالکنی میں لڑکی نظر آئی. آنٹی نے بھی کہا لڑکی ہے, چیمپئن نے بھی کہا لڑکی ہے. سب سے مزے کی چیز, سنی comes in. Sunny doesn't know anything. Sunny comes from Canada. The first night he sleeps, he notices in the middle of the night his bed's moving. The second night he sleeps, he notices his bed is moving. The third night he sleeps, he notices his bed moving. He goes to the washroom. Hashir is on the bed alone. He comes back, their bed is literally off the wall. Like wo ghasita hua kisi ne. You know what I mean? So a lot of things are happening. منجولیکا سے یاد ہے ردا کہاں پہ؟ میرے نا میں سویا ہوا تھا تو میرے اس طرح فلیش سا پڑا اٹھا لے الیاس. ہاں اچھا پھر بلی نہ کھا جائے پھر. اچھا تو فلیش سا پڑا, مجھے ایسا لگا کہ لڑکی ایسے گزری کوئی میرے آنکھوں کے سامنے سے ایسے, میری پلکیں بند تھیں. سو میں اٹھ گیا, اور آنکھیں کھلی تھی. میں نے کہا چلو ایٹ لیسٹ بیڈ تو نہیں نا ہلا. سو واللہ علی بھائی کو لڑکی کا تو بیڈ ایسے ایسے ہلنے لگ پڑا. ہو سکتا لڑکی. علی بھائی آپ سمجھ آئی. علی بھائی آپ کو کیوں لگا کہ گھوسٹ, ایک سیکنڈ علی بھائی آن اے سیریس نوٹ, آپ کو کیوں لگا گھوسٹ جو ہے وہ لڑکی ہے؟ اور زیادہ چیزیں علی بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے, پتہ ہے کیا پتا اس لڑکی کو لگا گھوسٹ علی بھائی. فلیش میں نظر بڑی پیاری لڑکی تھی ویسے, پر 1 سیکنڈ آدھے سیکنڈ کے لیے ایسے ہوا فلیش ایسے, ایسے میرے منہ پہ منہ آیا. علی بھائی ایمان سے بتائیں, آپ اسی کے ساتھ تو نہیں ڈیٹ پہ جا رہے, رات کو ملی تھی. سین پتا کیا ہے, مجھے جہاں تک لگتا ہے انہوں نے پہلے نہ کسی لڑکی کو چھیڑا ہوگا, وہ تنگ بیٹھ کے
इनको बदले ले तंग रही कर है। रही होगी, बदले ले रही होगी। हाय सोचे- भूतनाथ की तरह बदले लेके जाएगी वो अपना घर। Anyways, yeah, it's not something to joke about, honestly. You Sorry, shut man. up, But बट यार। जो भी है ताकतवर नहीं है, लाइक सिर्फ बेड हिला सकती है और ऐसे आ सकती है। मैं आज तुझे डेमो मैं मिलेगा मजाक भाई। कर रहा हूँ भाईजान, ये If you हमारा are watching पागल है। this ये हमारे podcast, साथ नहीं है। I challenge you, ओ और कुछ करके दिखाओ। भाई ये हमारे साथी है, ये हमारे साथी है, शायद ये हमारे कह साथी रहा है इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट वो तुझे लाइव देख रही है भाई। देखिए जी बहना, वो मैं कह रहा था कि जो करना है ऊपर वाले पोर्शन में करना प्लीज। सामने वाले रूम में, इस साइड पे नहीं आना। इस साइड पे 2 मासूम बच्चे रहते हैं, उस साइड पे सामने यार रहते एक दफा मैं बताती हूँ, ज़ुरियत मामू है ना, मेरे मामू, इसके अबू। ज़ुरियत मामू। हाँ, ज़ुरियत मामू के साथ ना एक दफ़ा कुछ इस टाइप का ही सीन हुआ था कि उनके सिर्फ उनके कपड़े एक स्पेसिफिक जगह से फट रहे थे, उनके ही कपड़ों पे कुछ हो रहा था, उन्हीं की चीज़ों को मतलब एक ही कमरे में ना कुछ होता था कि मतलब उनको बहुत फील होता था कि या इस कमरे में, ऑब्वियसली बात है कि फिर वही शावीर वाली बात कि आपके सराउंडिंग्स में कुछ हो रहा होता है तो आपको पता होता है, मतलब जो मर्जी है आपको पता होता है कि अच्छा ये दरवाज़ा मैंने नहीं बंद किया, ये खुद बंद हुआ है। अच्छा, तो ज़ुरियत मामू आके हमें मतलब हम लोग जब जाते थे तो बताते थे कि अच्छा हाँ ये सीन हुआ है, आज ये सीन हो गया, कल वो सीन हुआ था। एक दफ़ा ज़ुरियत मामू कमरे में गए, फुल दरवाज़ा खोल के, तार दरवाज़ा खोल के, जो भी है मैं तुम्हें अभी कहता हूँ मेरे सामने आओ, अगर तुम जो भी हो, तुम जो भी मखलूक हो, मैं तुम्हें अभी कहता हूँ, अगर तुम अल्लाह मियाँ की बनाई हुई मखलूक हो, तुम अभी सामने आओ, तुम अभी सामने आओ। और ना मतलब खड़े रहे थोड़ी देर, बोर सा हुए और फिर वापस आ गए। तो फिर अगले दिन पता चला कमरे में चूहा था। इतने शर्मिंदा, मुझसे पूछना कि ये स्टोरी कुछ इसी टाइप की थी क्या, लेकिन मुझे ये पूरी स्टोरी याद है क्योंकि Papa, if you're watching this video, never talk to me again. क्योंकि Honestly. ज़ुरियत मामू भी अपनी बेइज्जती ना छुपाते नहीं है बिल्कुल, तो उन्होंने खुद ही आके बताया हाँ वो तो मैंने की थी बात, तो एंड में पता चला जुआ है। तो हम लोग हंस के हमारा बुरा हाल कि हमें भी डराया कि अच्छा हाँ, हम जब वहाँ जाते थे हमें स्टोरीज पता चलती थी कि अच्छा आज ज़ुरियत मामू के साथ ये हुआ, अच्छा कल ये हुआ, अच्छा परसों वो हुआ टाइप ना। और हम लोग भी फुल बना के बैठे हुए कि ओ अच्छा इस कमरे में तो कुछ है ना, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जो मर्जी है। और हम लोग थे कि भाई चूहा था भाई, किधर किस फील्ड पे हो। यार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, पता है, like and honestly like it's weird because I've done so many podcasts on like ghost stories and stuff because but like it's weird that this is all of this is happening to us simultaneously together and it's just like यार मुझे लगता है तुम्हारे घर में हलचल ही बहुत है, कोई चलता चलता है ऐसे दरवाजे को तेज हवा यार रात में, के तेज 3 हवा बजे, में। रात के 3 बजे तो नहीं हलचल होती यार ना? हलचल होती है सुबह के हल्की सी। टाइम। तो चलो मेरी खैर बात सुनो, चलो whatever it is like हल्की सी हवा भी let's change the topic. प्रॉमिस, बस मेरा बेड मैं इनको बताया था, एक दफा यूं नीचे हुआ था, नीचे के ऊपर हुआ था, एक दफा यूं हिला था। प्रॉमिस में यार ये तो उसको ही बताया था। यार जमल आशिक की तेरा तरह तेरा बेड बहुत अजीब चीज है तेरा बेड तो वैसे नीचे है। अच्छा हल्का- आप जो कह रहे I हो don't understand वही it, चीज सनी के साथ भी, सनी ने भी फील किया अगले दिन के बेड हिला, वो चीज सनी ने यार फील मुझे की। अभी Like, कोई I बता understand देना, that, मुझे लेकिन- अभी कोई बता देना ये सोफे की डायरेक्शन हिल रही है, ये सोफा हिल रहा है, मैं 2 मिनट देखूंगी, मैं कहूंगी ओ शिट ये तो हिल रहा है। यार सनी जब पहले दिन आप आया जो तो उसे- सोचना शुरू कर देते हो आप वो फील करना शुरू कर देते हो। नहीं, बहन लेकिन जी ये अगर आप यहाँ feeling- कहीं हैं तो सुंदर साहब के साथ जाइएगा। मेरे घर में तो अपने हैं, मतलब ऐसे तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे भाई। आपा आप तो का तो वैसे भी अभी अली भाई के साथ सिस्टम है। अच्छा लिटरली anyways फोन निकाल के चेक किया कि जलजला तो नहीं आ रहा। सो ट्रस्ट मी, ये होता है। फोन से कैसे पता चलता है जलजला नहीं आ रहा? नहीं नेट पर लिख के मैग्नीट्यूड सारा कुछ आ जाता है ना, अगर राइट अवे जलजला हो तो पता चल जाता है। अच्छा, Did you मैं guys तो know- पंखा देख लेती हूँ। did you guys know the new iPhone is coming very soon? ओ कल